हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू कानून पुस्तिका। सीआरपीसी मॉक सेकंड में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, किसके प्रोटेक्शन के लिए है 162 सीआरपीसी? एक्यूज के, विटनेस के, या पुलिस ऑफिसर के, या मजिस्ट्रेट के? आंसर इज अक्यूज्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 162 of CRPC is available in civil proceedings, available for proceedings under Article 32 and 226 of the Constitution, not available in rape cases, only available in criminal inquiry or trial in respect of offence under investigation. किसके रिगार्डिंग है? आंसर इज only available in criminal inquiry or trial in respect of offences under investigation. Next is under the provision of the Code of Criminal Procedure, confession के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? Can only be made to the authorized persons. Only the magistrate enjoys the power of recording confessions. Made to the police officer are valid. Made by the accused while in police custody to a police officer is valid. Answer is option B. Only the magistrate enjoys the power of recording confessions. Next is which of the following statement does not hold true for the confessions made to the magistrate under the provision of CRPC? तो जो मजिस्ट्रेट को कन्फेशंस दिए गए हैं उनमें से इन गिवन प्रोविजंस में से कौन सी ट्रू नहीं है? जो ट्रू नहीं है वो बतानी है हमें, बताइए। It is the duty of magistrate to exclude the presence of the police officer from the place where the confession is recorded. It is obligatory for the magistrate to warn the accused because recording his confession that he is not bound to make it and that if he does so, it may be used as evidence against him. Next, the accused should be sent back to police custody as soon as the confession is recorded. Answer option number C is correct. Next is which of the following statement hold true for the magistrate's power to send an accused to remand under section 167 of the CRPC? तो 167 के अंडर जो रिमांड गिवन जो रिमांड दिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा 167 के अंडर, उनमें से इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी ट्रू है वो बताना है। इफ़ द इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट कम्प्लीटेड विद इन 60 days ही हैज़ टू रिलीज ऑन बेल। ठीक है। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिमांड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट एक्सीड 15 days. आफ्टर दैट ओनली सेंडिंग टू जुडिशियल कस्टडी इज़ पॉसिबल. नेक्स्ट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ remand in the judicial custody cannot exceed 15 days. After that, only sending to police custody is possible. If the investigation is not completed within maximum period of 90 days, the accused have to be released. Answer is option B is correct. The maximum period of remand is in police custody cannot exceed 15 days. After that, only sent to judicial custody is possible. Next is which of the following statement is not true under the provision of section 167? 167 के अंडर इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है? The provision for release is mandatory in the sense that the accused shall have to be released on bail. Magistrate have the power to remand accused to army custody for investigation. The order under the section is a judicial order. Only on the expiry of 60 days from the date of arrest of the accused, the further detention does not ipso facto becomes illegal. Answer is magistrate have the power to remand accused to army custody for investigation. Option B is correct. Next is which of the following is true of section 31 CRPC? Section 31 के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है इनमें से? It relates to the quantum of the punishment that the court has jurisdiction to pass where the accused is convicted of 2 or more offences at one trial. It is rule of procedural law, या either A and B या both A and B. Answer is both A and B, दोनों ही ट्रू हैं। Next is
Which of the following statement is not true regarding the charge sheet made under the provision of the Code of Criminal Procedure? Options हैं, in case of offence of a rape of child, the charge sheet must be submitted within 3 months of the FIR. After submission of the charge sheet, there cannot be any further investigation into the case by police. The right to be released on bail is lost once the charge sheet is filed. Charge sheet against absconding accused can be filed even if accused is not arrested. Answer is, after submission of the charge sheet, there cannot be any further investigation into the case by police. पुलिस के द्वारा नहीं की जा सकती फर्दर इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट सबमिट होने के बाद. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द टर्म टेकिंग कोग्निजेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ CRPC मीन्स. कोग्निज जो क्रिमिनल प्रोसीजर में हमारी दे रखा है टेकिंग कोग्निजेंस, उसका मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग ए ट्रायल, कंप्लीटिंग preliminary requirements for starting a criminal trial, taking notice of the matter judicially, and administrative action to decide if criminal trial is required. Answer is taking notice of the matter judicially. Next is, under the provision of CRPC for taking cognizance of an offence, judicial application of minds by the magistrate is not needed. It is not open to the court to analyze the evidence produced. Is an area exclusively within the domain of the magistrate and the officer in charge of the case. The offence must be committed within the territorial jurisdiction of a first class judicial magistrate. Answer is, it is not open to the court to analyze the evidence produced. Option B. Under the provisions of the Code of Criminal Procedure, cognizance can be taken of. किस चीज़ का cognizance ले सकते हैं? Offence, accused, witness, offenders. Only A, 1 and 3, 1 and 2, 1 and 4. Answer is only 1. Offence का ही लेते हैं बस. Cognizance तो offence का ही लेंगे. Next is, in which of the following cases will the provision of section 197 of the CRPC apply? इनमें से कौन से केस पे 197 लगेगा? पढ़िए. आंसर इज, ए जज चार्ज विद एनी यूजिंग डिफेमेटरी लैंग्वेज टू एविडेंस ड्यूरिंग ट्रायल ऑफ ए सूट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स नीड नॉट टू बी फॉलोड अंडर सेक्शन 200 ऑफ CRPC? कौन सी फॉलो नहीं की जानी चाहिए? द कंप्लेनेंट मस्ट बी एग्जामिन्ड. Examination of the complainant must be under oath. The accused must be given an opportunity to be heard. The examination of the complainant must be reduced to writing. Answer is, the accused must be given an opportunity to be heard. Next is, under the provisions of section 202 of the CRPC, the magistrate cannot 202 के अंदर मजिस्ट्रेट क्या नहीं कर सकता? ऑप्शन ए, कंडक्ट द इंक्वायरी हिमसेल्फ, ask the police officer to conduct an investigation, ask a person who is not a police officer to conduct an investigation, use judicial discretion. Answer is use judicial discretion. cannot पूछ रखा है इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज, the magistrate under provision of section 203 of CRPC can dismiss a complaint. 203 के अंदर कैसे dismiss कर सकता है? Even if the proceedings against the accused has commenced, proceedings commence हो चुकी हों accused के खिलाफ, तब भी कर सकता है dismiss. Even if there is sufficient ground for proceeding, क्या उसके sufficient ground of proceedings के तो भी dismiss कर सकता है complaint को. Even if inquiry under 202 of the CRPC is not done, 202 के अंदर जो इंक्वायरी है वो नहीं की गई हो तो भी डिसमिस कर सकता है. Even if the complainant is not examined, कंप्लेनेंट एग्जामाइन नहीं कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो भी डिसमिस कर सकता है. आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट. Even if inquiry under section 202 of CRPC is not done. Next is, which of the following statement hold true for
plea of guilty under the provisions of CRPC. कौन सी ट्रू रहेगी रिगार्डिंग प्ली ऑफ गिल्टी? द प्ली ऑफ नॉट गिल्टी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय CRPC. CRPC के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है. प्लीडर कैन मेक प्ली ऑफ गिल्टी ऑन बिहाफ ऑफ द अक्यूज. प्लीडर अक्यूज के बिहाफ पे कर सकता है गिल्टी प्ली. द एडमिशन मेड बाय द अक्यूज इज बाइंडिंग ऑन हिम. जो अक्यूज के द्वारा एडमिशन किया गया है वो उस पर बाइंडिंग होगा. प्ली ऑफ गिल्टी टू ए कैपिटल चार्ज इज इनएडमिसिबल. कैपिटल मतलब जिसमें डेथ पनिशमेंट है उसमें प्ली ऑफ गिल्टी लेते हैं तो वो इनएडमिसिबल रहेगा. आंसर इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए ट्रू है. नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 239 and 240 of the CRPC, reasons must be given if the accused is discharged. accused discharge किया जाता है उसके रीज़न रिकॉर्ड होते हैं. reasons must be given if the charge are framed against him. उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया जाता है तो भी रीजन्स रिकॉर्ड होते हैं. hearing includes hearing of evidence if needed. तो ऑप्शन 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या only second is correct. Answer is option B. 1 and 3 are correct. Next is under section 243 of CRPC. 243 के रिगार्डिंग बतानी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. A magistrate cannot issue summons to the complainant for being examined as a witness to the accused. The court cannot ask the accused to dispose expenses which might be incurred by the witness. At the instance of the accused, the complainant can be resummoned. Yeah, all of the above. Answer is a magistrate cannot issue summon to the complainant for being examined as a witness of the accused. Option A is correct. Next is under the provision of CRPC, normally a person cannot be discharged unless the prosecution evidence has been taken and the magistrate considers for the reason to be recorded that no case is made out against the accused. Which of the following sections contain exception to this rule? इस रूल की एक्सेप्शन बतानी कौन सी सेक्शन में है. 239, 245, 248, 203. आंसर इज 245. नेक्स्ट इज which of the following statement does not hold true under section 246 of CRPC. कौन सी ट्रू नहीं है regarding 246 of CRPC? The magistrate can exercise his discretion to allow cross examination or not. उसकी डिस्क्रिशन है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन अलो करे या नहीं मजिस्ट्रेट की. द अक्यूज कैन नॉट क्रॉस एग्जामाइन द विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन बिफोर द चार्जेस आर मेड. क्रॉस एग्जामिनेशन चार्जेस से पहले नहीं किया जा सकता. इफ़ द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, मजिस्ट्रेट इज़ बाउंड टू रिकॉर्ड द प्ली. मजिस्ट्रेट बाउंड होगा अगर अक्यूज ने प्ली गिल्टी कर लिया तो उसकी प्ली को रिकॉर्ड करने के लिए मजिस्ट्रेट बाउंड होगा. इफ़ द अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी, मजिस्ट्रेट इज़ नॉट बाउंड टू कन्विक्ट हिम. अगर उसने गिल्टी प्ली कर लिया तो मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं होगा उसको कन्विक्ट करने के लिए. आंसर इज ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. द अक्यूज्ड कैन नॉट क्रॉस एग्जामाइन द विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन बिफोर द चार्जेस आर मेड. हमें नॉट ट्रू बताना था. नेक्स्ट इज which of the following statements hold true under section 248 of the CRPC. 248 के अंदर अब ट्रू बताना है हमें. 248 के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. द मजिस्ट्रेट does not have power to discharge the accused. This section will apply when some evidence has been let in and such evidence is not satisfactory. This section does not apply in case of the prosecution cannot produce any evidence. The magistrate does not have power to pass sentence on the accused. Answer is option B. Next is discharge of the accused under section 249 of CRPC. जो 249 के अंडर डिस्चार्ज होता है accused का उसके रिगार्डिंग बतानी है स्टेटमेंट करेक्ट. इफ is considered to be acquittal for the purpose of section 300 of CRPC, is based on the merits of the case, acts as a bar on filing second complaint, need not to be done in case the complainant dies. Answer is option D. Next is
The order for compensation under section 250 of CRPC can be made. कैसे ऑर्डर कंपनसेशन का ऑर्डर देने की बात है. ऑप्शन है इन केस वेयर द ऑफेंसेस आर कंपाउंडेड, वेयर डिस्चार्ज और एक्विटल इज नॉट मेड बाय द मजिस्ट्रेट, ओनली वेयर द ऑफेंसेस चार्ज्ड इज ट्रायबल बाय हिम बाय द सक्सेसर इन ऑफिस. आंसर इज ऑप्शन सी, बाय द मजिस्ट्रेट ओनली वेयर द ऑफेंस charged is triable by him. Next is an order under section बताना है हमें of the CRPC acts as a bar under section 300 of the code to the trial of the accused for the same offence. Section 256, 203, 227 or 239. Answer is section 256. 256 300 पे बार है. नेक्स्ट इज द मजिस्ट्रेट ऑफ एट हिज डिस्क्रिशन कैन अलाउ द कंप्लेनेंट टू डिस्चार्ज द अक्यूज्ड एंड एक्विट द अक्यूज्ड इन केस ऑफ वारंट केस, समन्स केस, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी. आंसर इज इन समन केसेस. In which of the following cases was it held that the defect resulting from non-compliance of section 275 of the Code of Criminal Procedure in the absence of actual or possible failure of justice is curable under section 464 and 465 of the CRPC. कौन से केस में बोला गया था ये? आंसर इज अब्दुल रहमान वर्सेस एम्परर, ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज for the application of section 300 of CRPC it is not necessary. क्या necessary नहीं है section 300 के regarding, double jeopardy के regarding, that there must have a previous trial of the accused, for the accused to be acquitted in the previous trial, for the previous proceedings to have been for an offence, for the second trial to be for the same offence. Answer is for the accused to be acquitted in the प्रीवियस ट्रायल में वो एक्विट होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है. एन एडवोकेट हु इज अक्यूज्ड ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस इज एंटाइटल्ड टू कंडक्ट हिज ओन डिफेंस. ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस इज नॉट एंटाइटल्ड टू कंडक्ट हिज ओन डिफेंस. with others of a criminal offence is not entitled to appear at the trial as counsel for his co-accused. With others of a criminal offence is entitled to appear at the trial as counsel for his co-accused. तो कौन सा करेक्ट है? 1 and 3rd, 1 and 4th, 2nd and 3rd, 2nd and 4th. आंसर इज ऑप्शन ए, 1 and 3rd. मतलब कि वो एडवोकेट अगर अक्यूज है तो वो अपने केस में खुद का डिफेंस ले सकते हैं. एंड विद अदर्स ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस इज नॉट एंटाइटल्ड टू अपीयर एट द ट्रायल एज काउंसिल फॉर हिज को अक्यूज्ड. नेक्स्ट इज which amongst the following is not competent under section 92 of CRPC to order the postal or telegraph authority to deliver documents or things? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या कोई भी कम्पिटेंट नहीं है. आंसर इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज द वर्ड इंस्पेक्शन यूज्ड इन सेक्शन 93 क्लोज 1 सब क्लोज सी CRPC refers to things or documents, locality and place, both A and B, either A or B. Answer is locality and place, option B. Next is a search warrant can be issued in respect of a place. कौन से प्लेस के रिस्पेक्ट में सर्च वारंट इशू किया जा सकता है? यूज फॉर डिपॉजिट एंड सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, यूज फॉर डिपॉजिट सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ काउंटरफिट कॉइन करेंसी नोट्स एंड स्टैम्प्स, यूज फॉर डिपॉजिट सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट एंड फॉल्स सील्स या ऑल ऑफ द अबव. आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव. नेक्स्ट इज under section 95 of CRPC certain publications can be forfeited and such warrant can be issued for the same. In this context the provisions are: a newspaper cannot be forfeited
and search warrant cannot be issued for the same, as it would be violative of the fundamental rights of speech and expression and involves the fourth state. A book can be forfeited and search warrant can be issued for the same. A document can be forfeited and search warrant can be issued for the same. तो ए बी करेक्ट है, ए एंड सी करेक्ट है, बी एंड सी या ए बी एंड सी ऑल आर करेक्ट. आंसर इज B and C are correct. Option C. Next is Section 87 of CRPC authorizes issuance of warrant. 83 के अंदर वारंट इशू किए जाते हैं जो वो क्या ऑथराइज करते हैं इन lieu of summon, in addition to summon, both A and B, none of the above. Answer is both A and B, in lieu of summon and in addition to summon. Next is a declaration of forfeiture under section 95 of CRPC can be set aside by. किसके द्वारा set aside किया जा सकता है? 95 में जो declaration होती है forfeiture की वो magistrate issuing the search warrant, CJM और CMM, court of session या high court. Answer is by the high court. Option D. Next is the period of limitation for an application to set aside the declaration of forfeiture has been provided. जो period of limitation दिया गया है forfeiture की declaration को set aside करने के लिए वो कौन सी section में दिया गया है? Under section 95 of CRPC या 96, 97 या 98. And the same is 1 month from the date of publication of declaration, 2 months from the date of publication, या 3 months from the date of publication या 6 months from the date of publication. Answer is option B. Next is during investigation a search can be conducted without warrant by police, any police officer, the investigating officer, both A and B या either A or B. Answer is the investigating officer. Option B. Next is search without warrant can be conducted under section 103 of CRPC. जो 103 के अंडर सर्च किया जाता है बिना वारंट के इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट हु इज़ कॉम्पिटेंट टू इशू सर्च वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस. जो कॉम्पिटेंट है सर्च वारंट इशू करने के लिए या फिर जो कॉम्पिटेंट नहीं है या बोथ एंड बी या नीदर ए नॉर बी. आंसर इज ऑप्शन ए, मजिस्ट्रेट जो कॉम्पिटेंट है सर्च वारंट इशू करने के लिए. नेक्स्ट इज सर्च वारंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए प्लेस. एक प्लेस के रिस्पेक्ट में सर्च वारंट के क्या इंक्लूड करता है? इंक्लूड्स सर्च ऑफ ए पर्सन प्रेजेंट इन और अबाउट दैट प्लेस. Does not include search of a person in or about that place. Include search of a person in or about that place only if such person is suspected for concealing about his person any article for which search is being made. None of the above. Answer is option C. Include search of a person in or about that place only if such person is suspected for concealing about his person any article for which search is being made. Suspected होगा तो ही कर सकते हैं. Next is joining of two or more independent or respectable inhabitants of the locality in which the place is to be searched is the mandate under. अगर सर्च करते हैं किसी लोकेलिटी में तो वहाँ के दो से ज़्यादा इनहेबिटेंट मतलब वहाँ रहने वाले रहवासी जो होते हैं वो ज़रूरी हैं वहाँ के सर्च करते हैं. तो कौन से सेक्शन में दिया गया है ये? सेक्शन 100 क्लोज 1, 100 क्लोज 2, 100 क्लोज 3, 100 क्लोज 4. आंसर इज 100 क्लोज 4 ऑफ CRPC. ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज where a magistrate not empowered by law to issue a search warrant for a place suspected to contain certain stolen property erroneously issues a search warrant, the search proceeding should be void and liable to set aside. The search proceeding shall not be void and not liable to be set aside. The search proceeding shall be set aside only if challenged by any person
aggrieved by the search, या either A or C. Answer is either A or C. A भी हो सकता है और C भी हो सकता है. Next is Section 93 Clause 3 of CRPC provides that no magistrate other than a district magistrate or chief judicial magistrate shall issue warrant of a search for a document, parcel or other things in the custody of Postal and Telegraph Authority. If any magistrate not so specified issues such a warrant, the search proceeding shall be void. The search proceeding shall be voidable if challenged. At the instance of a person aggrieved shall remain valid, none of the above. Answer is option A. The search proceeding shall be void. Void हो जाएगी वो search proceeding. Next is in a non-cognizable case where a magistrate orders the police to investigate, in that it will be at par with the cognizable offence case and the police will have all the powers in respect of the investigation, including कौन सी पावर और इंक्लूड हो जाएंगी उसमें इन्वेस्टिगेशन वाली पावर में includes the power to arrest without warrant, except the power to arrest without warrant. Both are correct depending on circumstances, या none of the above. Answer is except the power to arrest without warrant. Without warrant के arrest नहीं कर सकता वो. Next is Section 39 and 40 of CRPC make it mandatory to give information regarding commission of certain offences. Such information can be given to किसको दी जाएगी information? मजिस्ट्रेट को, पुलिस ऑफिसर को, या मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर में से कोई भी, या द मजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर बोथ साइमल्टेनियसली. आंसर इज ईदर टू ए मजिस्ट्रेट और टू ए पुलिस ऑफिसर, किसी को भी दे सकते हैं दोनों में से. नेक्स्ट इज वेयर द पुलिस when the police register a case regarding commission of a cognizable offence, the registration of the case is under किसके अंडर रजिस्ट्रेशन होगा उस केस का 154, 155, 156 क्लोज 3 या 190. आंसर इज ऑप्शन ए सेक्शन 154 ऑफ CRPC. नेक्स्ट इज यूजुअली a copy of FIR is filed with the magistrate having jurisdiction to take cognizance by the police officer in compliance of. एक जो FIR की एक कॉपी जो मजिस्ट्रेट को दी जाती है वो कौन से सेक्शन के अंडर दी जाती है? 156, 157, 158 या 159? तो 157 ऑफ CRPC. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज डिले इन डिस्पैचिंग द FIR टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 of CRPC shall always throw out the prosecution case in his entirety, shall never be a circumstance providing a legitimate basis for suspecting the FIR, may or may not be a circumstance providing a legitimate basis for suspecting the FIR depending on the facts and circumstances both on record, या either B or C. Answer is may or may not be a circumstance providing a legitimate basis for suspecting the FIR depending on the facts and circumstances both on record. Option C is correct. Next is where the FIR discloses prima facie commission of cognizable offence and there is a delay in sending the FIR to the magistrate under section 157 of CRPC. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इस रिगार्डिंग? द इन्वेस्टिगेशन मस्ट गो ऑन. द मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर फॉर स्टॉपिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन अकाउंट ऑफ डिले इन सेंडिंग द FIR. द मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर for stopping of investigation irrespective of the delay in sending the FIR. The magistrate can order for stopping of investigation generally. Answer is the investigation must go on. Option A is correct. Next is the investigating police officer in a case has power to require attendance of a person acquainted with the facts and circumstances of the case under section 158, 159, 160 or 161. Answer is section 160 of CRPC. Option C is correct.
तो ये थे आज के CRPC के मॉक के 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।